नमो बुधाय, जय भीम, जय संविधान, जोहार साथियों। अभी वॉशिंगटन डीसी के अंदर राहुल गांधी जी ने इंटरव्यू दिया और उसमें उनसे अनेकों सवाल पूछे गए, जिन सवालों का विस्तार से उन्होंने जवाब दिया। सवाल एससी, एसटी, ओबीसी के रिजर्वेशन से संबंधित थे, उनकी हिस्सेदारी भागीदारी से संबंधित थे, उनको अपॉर्चुनिटीज बराबर मिली हैं या नहीं और कैसे मिलेंगी, कैसे रिजर्वेशन कब तक चलेगा, कब खत्म होगा, उससे संबंधित है। उसके ऊपर राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया, वो बयान देखिए, ये है। Absolutely. Namaste, Rahul Gandhi ji. My name is Apurva Ramakrishnan, and well, because in your talk you did mention caste and reservation, I'm going to throw you a hardball question. In that, I would specifically like to know your thoughts and your party's thoughts on at what point, if at all, would we move away, or would you move away from the idea of caste-based reservations being a permanent solution to the underlying grassroots issues that necessitate such reservation-based systems? At what point would we as a society, but more importantly, you and your party, look at caste as caste-based reservations as a treatment of the symptoms and not the actual problem? Why do you say caste-based reservations are treatment of the symptoms? Because I believe that the reservations, when they came about historically as well, were there to provide equal access to opportunity. And the issue is, even today, the access to opportunity is where the lag is there. And do you think there are better ways to strengthen our systems institutionally at the grassroots levels than the caste-based reservation? Well, let's look at the numbers. If you look at the Indian government, and you look at, there are 70 bureaucrats who run the Indian government, secretaries to the government of India. These are the guys that take pretty much all the financial decisions in the government. Okay? If you add up Dalits, tribals, OBCs, they come to 73%. Out of 70 people, there's one tribal. I think 3 Dalits, 3 OBCs. So, and I think a minority. So, 90% of India, in the government of India, has access to less than 10% of the positions that determine how money is going to be spent. And when you actually look at the financial numbers, then tribals get 10 paisa out of 100 rupees. Dalits get, I think, 5 rupees out of 100 rupees. And OBCs get a similar number. So the fact of the matter is that they're not getting participation. Right? And the problem is that 90% of India is not able to play, right? Go through the list of every single business leader in India. And I've done it. Show me the tribal name. Show me the Dalit name. Show me the OBC name. Out of the top 200, I think there's one OBC. They're 50% of India. So we're not treating the symptom. That's the problem, right? Now, it's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem. Because there are many people who come from the upper castes, right? Who say, look, what have we done wrong? Right? Why are we being punished? And so then you think about increasing dramatically the supply of some of these things. You think about decentralizing power. You think about involving many more people in the governance of our country. Right? You think of opening up, I mean, frankly, with all due respect, I don't think any of you are ever going to become Adani or Ambani. And there's a reason for that. You can't. Because those doors are closed. So the answer to people in the general caste is you open those doors.
उस बयान में जो राहुल गांधी जी ने कहा था उसके छोटे से टुकड़े को काट के, कुछ सेकंड के टुकड़े को काटकर भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया राहुल गांधी जी के खिलाफ कि राहुल गांधी अनुसूचित जाति जनजाति का रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, जबकि ऐसा था नहीं। पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों से 200 देश के बड़े उद्योगपतियों में एक भी उद्योगपति नहीं है। उन्होंने कहा कि जाति की जनगणना होनी चाहिए, उनका आर्थिक और शैक्षणिक सर्वे होना चाहिए। देश के लगभग 80 के आसपास जो सचिव हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, भारत सरकार की जो आर्थिक नीतियां और तमाम नीतियां बनाते हैं, उसमें SC ST OBC का प्रतिनिधित्व नहीं है, जिसकी वजह से उनके लिए कोई योजनाएं नहीं बनती हैं। साथ ही साथ उनका उद्योग में, व्यापार में, प्राकृतिक संसाधनों में कोई हिस्सा नहीं है। न्यायालयों में उनकी भागीदारी नहीं है, मीडिया के अंदर उनकी भागीदारी नहीं है, हेल्थ केयर में उनकी भागीदारी नहीं है। तमाम क्षेत्रों में ये वंचित रह गया समाज। ऐसे हालात में दूसरी तरफ जाति की वजह से उत्पीड़न, इन सब हालातों में रिजर्वेशन का रहना जरूरी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या रिजर्वेशन को खत्म करना चाहिए, कब करेंगे आप, तो उन्होंने कहा जिस दिन SC ST OBC के लोगों को समान अवसर मिल जाएंगे, संसाधनों में बराबर का हिस्सा मिल जाएगा, हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी और जिस वजह से आरक्षण मिला था वो वजह खत्म हो जाएंगी, उस दिन आरक्षण को खत्म करेंगे। यानी यही बात तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कही थी कि जिस दिन सब लोग समान हो जाएंगे, जाति की वजह से उत्पीड़न बंद हो जाएगा, संसाधनों में बराबर हिस्सेदारी भागीदारी हो जाएगी, तब रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। तो कोई अलग बात तो कही नहीं है। लेकिन उसमें से पीस काट के जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने उसका इस्तेमाल किया, मुझे उसका परहेज नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो इस काम को करने की राजनीति कर रही है और वैसे भी गंदी राजनीति करती है। लेकिन बहुजन समाज के भी अनेकों लोगों ने और अनेकों नेताओं ने पूरे बयान को पढ़े और समझे बिना, सुने बिना भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिला दिया। ये तो शर्मनाक बात है। कम से कम पूरा बयान तो सुन लो, समझ तो लो, उसके बाद बोलो। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोला और वो जो हिस्सेदारी भागीदारी की बात है, 50% के आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात है, यही तो बातें राहुल गांधी जी ने की है। नेचुरल रिसोर्सेज सहित तमाम क्षेत्रों में, न्यायालय में, मीडिया में, हर जगह उनको हिस्सेदारी मिले, यही बात की है। इसमें गलत क्या कहा है? तो मैं कहना चाहता हूं बहुजन समाज के लोगों से कि आप भाजपा के सुर में सुर मिलाने की बजाय पूरा बयान सुनिए और उसके बाद सामाजिक न्याय की लड़ाई में साथ आइए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन, जो फूले साहू अम्बेडकर पेरियार का जो मिशन था, जिसको बाद में माननीय कांसीराम साहब ने आगे बढ़ाया, उसी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए, इसी से मूवमेंट आगे बढ़ेगा। बिल्कुल भी गुमराह मत होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।